Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, as I promised कि मैं जैसे ही न्यू होटल में चेक इन करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को न्यू होटल रूम दिखाऊंगी एंड उसके साथ साथ होटल भी दिखाऊंगी। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली मैं आज आप लोगों को होटल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही लेट चेक इन किया है, तो इस वजह से बाहर बहुत ही डार्क है और वीडियो अच्छे से मतलब शूट नहीं होगा। तो इस वजह से मैं सिर्फ आज आप लोगों को रूम दिखाऊंगी और कल सुबह होते ही मैं आप लोगों को होटल दिखाऊंगी। गाइज इस प्रॉपर्टी का नाम है रैडिसन गोवा कंडोलिम और ये एकदम कंडोलिम बीच के नज़दीकी है। एक्चुअली गाइज हम लोगों ने ना ये डायरेक्ट बुकिंग किया है क्योंकि लास्ट मिनट में बुक किया था ना, तो इस वजह से ऑनलाइन साइट में ये अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप चाहो तो आप इसे ऑनलाइन से भी बुक कर सकते हो, ये हर एक ऑनलाइन साइट में अवेलेबल है। अगर आप इसे डायरेक्ट बुक करोगे तो शायद ये आपको थोड़ी सी प्राइसी पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में ये थोड़ी सी सस्ती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बुक करो, पर मेरे ख्याल से आपको ऑनलाइन साइट में ही जाना चाहिए। तो चलिए गाइज अभी देखते हैं कि इस होटल का रूम कैसा है। और हाँ, मैंने जो कैटेगरी बुक किया है इस रूम का कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव रूम।
ये था मेरा न्यू होटल रूम टूर और कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सुबह होते ही होटल का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का वीडियो। आज नहीं मैं दिखा पा रही हूँ, आप तो देख ही चुके हो कि बाहर बहुत ही अंधेरा है तो वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। और ये रूम तो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, पर एक ही बैकड्रॉप है, बैल्कनी बहुत ही छोटी है, पर ठीक है चलता है। तो रूम में ही रहेंगे हम, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है बैल्कनी छोटी होने से। सो हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये होटल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा आने के लिए तो ये होटल आप ट्राई कर सकते हो एक बार। तो ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। टाटा। So yeah guys, I hope you like this video. If you like this video, then please let me know in the comment section box, and also hit the like button, and don't forget to subscribe my channel and also hit the bell icon, so whenever I upload a new video you will always get the notifications. Till then, take care, bye bye.